students, Assalamu alaikum. Hope all of you are fine, happy and healthy. Now I'm going to start my next lecture related to computer subject. In previous lecture we discussed about basics of computer. I have told you that computer do work on the basic criteria, that is input, processing and output. Input we enter into the computer, that data is known as input. Input may be text, image, video, etc. And processing is done by CPU. After processing we get output from the computer, right? For example, output examples of output are books, videos, whatever, right? uh, these are the basics lectures related to computer. So you must know about definition of computer. Computer is an electronic machine which takes input, process it and give result to the user, right? In previous lecture we have discussed about input, processing and output. इनपुट वो डेटा होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर में एंटर करते हैं. इनपुट हम कीबोर्ड, माउस और बाकी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एंटर करते हैं. प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के थ्रू. और आउटपुट हम कंप्यूटर हमें आफ्टर प्रोसेसिंग देता है. जो भी हमने उसको प्रोसेसिंग के लिए दिया होता है, जो भी हमने डेटा दिया होता है उस पर प्रोसेसिंग करता है और फिर हमें आउटपुट शो होती है. जैसे फॉर एग्जांपल हम बुक्स बना रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वो हमें आउटपुट मिलेगी, राइट? Now in this lecture we will discuss about input devices and output devices. Input devices, just think about it, that input devices are the devices which are used to enter data into the computer, right? Which are used to input data. इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं. वो डिवाइसेस जिसके थ्रू हम डेटा एंटर करते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं. द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग नोन एज input devices. For example, most common input devices are keyboard and mouse. Other input devices are scanner, microphone, joystick, light pen, trackball, etc. Right? मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड एंड माउस आप देखते हैं कि जो भी फंक्शनल कंप्यूटर होता है उसके साथ यूज़ होता है. लेकिन बाकी इनपुट डिवाइसेस आप एट द टाइम ऑफ यूज़ आप डिपेंड ऑन द इनपुट और आउटपुट वो हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल जब हमें स्कैनिंग पेजेस कोई स्कैन करने होते हैं, पेपर स्कैन करने होते हैं, तो आप स्कैनर यूज़ करते हैं. इसी तरह से आउटपुट डिवाइसेस भी डिफरेंट पर्पज़ के लिए चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ भी फाइल, डेटा, वटेवर डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप प्रिंटर यूज़ करेंगे, राइट? Now we will discuss about output devices. The devices which are used to give result to the user after processing known as output devices. वो devices जिसको यूज़ करके हम आउटपुट लेते हैं कंप्यूटर से उसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं. मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रही होती है आउटपुट डिवाइस वो मॉनिटर होती है, राइट? एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, printer, headphones, speakers, projector, sound card, video cards, etc. Right? Keyboard, mouse and monitor are most commonly used and all the other devices are used at the time of need, right? Now this is the criteria on which computer do work: input, processing and output. इनपुट वी गिव टू द कंप्यूटर. इनपुट डेटा होता है, ठीक है? वो डेटा जैसे ये पेज एम्प्टी था, इसमें मैंने ये डेटा एंटर किया है तो ये हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, राइट? और आउटपुट जब हम आफ्टर प्रोसेसिंग, जैसे मैंने ये डेटा लिखा है उसके बाद हम जब इसको देखते हैं तो वो हमारे पास आउटपुट होती है. इसी तरह से आप ये माइंड में रख लें कि जैसे आप मोबाइल को यूज़ करते हैं, मोबाइल में कोई नई वीडियो आप जब बनाते हैं, न्यू वीडियो जब आप बना रहे हैं तो वो आप क्या कर रहे हैं, मोबाइल में डेटा इनपुट कर रहे हैं, ठीक है? जब आप जो स्टोर डेटा है वो देखते हैं तो वो आपके पास क्या होती है, वो आउटपुट होती है, ठीक है? अब वो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं. अंडरस्टैंड? इनपुट डेटा होता है, आउटपुट भी डेटा होगा, ठीक है? ये आपने माइंड में रखना है. इनपुट और आउटपुट डेटा होता है. डेटा क्या होता है, जो भी हमने डेटा एंटर किया है, A to Z वटेवर, जो भी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ये आपके पास डेटा है, ठीक है? और जो डिवाइसेस होती हैं जिसके थ्रू आप डेटा एंटर करते हैं वो हार्डवेयर होती हैं, ठीक है? उनको आप टच कर सकते हैं फिजिकली और उनको यूज़ करके आप इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करके आप डेटा एंटर करते हैं. कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा, जो भी मैंने ऊपर नाम बताए हैं आपको, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल एक्सेट्रा, ठीक है? प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ एक डिवाइस यूज़ होती है विच इज़ CPU. प्रोसेसिंग इज़ डन ओनली बाय CPU.
फॉर एग्जांपल जैसे वाइवा में वाइवा के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैंने डिफरेंट स्टूडेंट से पूछा कि प्रोसेसिंग के लिए और कौन सी डिवाइस होती है, तो वो और बहुत सी डिवाइसेस के नेम्स बताते हैं, लेकिन आप लोग ये बात याद रखें कि प्रोसेसिंग के लिए सिर्फ सीपीयू यूज़ होता है। सीपीयू इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग, सीपीयू इज़ द ओनली डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग, राइट? नो अदर डिवाइस इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग. CPU is the central part of the computer. This is known as central processing unit, right? This is the main part of the computer. All the devices are attached with the CPU, USB, or any other device, whatever we use in the computer system, we must attach this in the CPU, right? With the CPU. Next, output. Output is the data which is we get after processing from the computer, right? For example, books are output, whatever we see, projects, etc. And output devices are used, most commonly is used to monitor, and other devices are printer, projector, speaker, video card, etc., right? All the other devices are used at the time of need, at the time of all the other devices are used, depend on the type of input or output, right? What type of input or output we get from the computer, then we use that type of output. For example, अगर हमने प्रिंट करना है तो हम प्रिंटर को यूज़ करेंगे, अगर हमें वॉइस चाहिए तो हम स्पीकर यूज़ करेंगे. Got the point? Okay, thank you and have a nice day. Hope you understand the lecture. Bye.